बता दिया था. So you can see this chameleon property word file. Yes, sir. Okay. So this is an important consequence of the order completeness property. Uh, there are very simple things that require a bit of sophistication in expression. If you have any two real numbers, A and B, and for the timing, we're talking about two positive real numbers. So you can always find a positive integer such that the multiple of A will ultimately be larger than B. For example, if I have a number 7 and 32, so what will be such a number which when multiplied to 7 becomes greater than 32? Are you listening to me? जी सर सुन रही हूँ, लिख रही थी मैं. Okay. So I just ask if I select two numbers, 7 and 32. Yeah. Can you suggest an integer which multiplied to A, yani 7, will become greater than 32? Sir, 7 are 49. 7 fives are 35, which is larger Yes. than 32. So this is saying that given any two real numbers that are positive, there exists a positive integer which when multiplied to one of them, uh, uh, then this multiple will become greater than b. मेरा ख्याल है इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर लें कि a is less than b. Then it becomes more relevant. So दो नंबर जब डिफरेंट हैं तो लॉ जी कहिए. सर व्हाट्सएप के ग्रुप पे बच्चे बोल रहे हैं कि उनको क्लास में एंटर कर लें, अलाउ कर लें. भाई मेरे पास आ नहीं रहे वो. हाँ ये आया ना. सॉरी 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 सॉरी. असल में इसको मैं एक कोने में सामने रखता हूँ और जैसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं उसको एंटरटेन करता हूँ. वालेकुम सलाम. So I was talking about our chameleon property, which is an important consequence of the order completeness property of set of real numbers. And we are stating the property in terms of a theorem that the real number field is Archimedean. And what's the meaning of that? The meaning is that if you consider any two numbers, A and B, A less than B, uh, they are positive real numbers, then there exists a positive integer that will make a multiple of A, and multiple of A, there will be a smallest number n, which will take multiple of A beyond B, or multiple of A will become greater than B. So it's very simple. You choose two numbers. I was saying is 7 or 32. So there are many integers. 7 fives are 35. That is greater than a B. That satisfies this property. 7 multiplied by 7 is 49, which is also greater than 32. So one can also say that there will be a smallest integer that will make the multiple of A greater than B. Now, there is a simple proof that is shared here. Okay, we suppose that NA is less than or equal to B for all n belonging to the set of positive integers.
We have just supposed this, whereas we have to prove that NA is greater than B. On contrary, we are assuming that N times A is less than or equal to B. Now that will make a set of numbers NA, जिसमें A तो fixed है, लेकिन N can be any integer. Now, since every such element is less than B, that means uh, this set is bounded above, because every element we have assumed, every element like an A, we assume to be less than B, so this set is bounded above. And due to the order completeness property of R, this set will have a supremum. So we say that this set has some supremum M, capital M. Now, capital M has to be greater than or equal to every multiple of A, according to our assumption. Uh, if it is and A is less than or equal to M for every integer, that means अगर मैं n की जगह n+1 रख दूं, तब भी ये statement true होना चाहिए under our assumption. So n+1A will be less than or equal to M for every n, which is a positive integer. Now, if I explore this line, it gives me NA plus A is less than or equal to M. That will make NA is less than or equal to M minus A. Now, what does this mean? Every element of the set S has what form? Multiples of A. हमने कहा कि ये set bounded है because of this property, this assumption that we have on contrary assumed. So जब NA has to be less than or equal to M, then n+1A should also be less than or equal to n. And from here we write down NA is less than or equal to M minus A for every positive integer. This means M minus A is an upper bound of S. But we assume that the supremum of this set is M. So M minus A how can it be an upper bound? M is the supremum of the set S, and upper bound M minus A of S is less than its supremum, which is a contradiction. That means our initial assumption was wrong, that multiple of A is not going to be less than B for every integer. There will be some integer for which an A becomes greater than B, which proves the theorem. There are some interesting corollaries that I have listed here. If A is a positive real number and B is any real number, positive or negative, then there exists a positive integer n such that n times A is greater than B. नेगेटिव के केस में आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं होगा, तो any real number, so B should not be negative, B has to be positive. For every positive real number A, there exists a positive integer n that is greater than real number A. So if I think about any real number, it can be say 3.756. Now, if A is 3.756, can you tell me a positive integer which is greater than A? 4. Definitely 4, 5, 6, 7, but the smallest of them is 4. So every real number is followed by an integer, is the second corollary. Now, if you take a small number, epsilon, positive, exists an integer n, so then 1 upon n will be less than epsilon. Now, what kind of numbers we choose for epsilon or delta? We choose numbers like 0.001. What's the reciprocal of 0.001? 1000 or something very 1000. difficult. Na? So, if I take a small number 0.001, now that will be less than some reciprocal of some positive integer.
So if epsilon is 0.001, uh, n भी पॉजिटिव है, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, इस इनइक्वालिटी को तुम उल्टा भी लिख सकते हो, 1 upon epsilon is less than n. Uh, so these corollaries are just different versions of the original Archimedean property. So field of real numbers is not only ordered, it is also complete and if anyone आज जब कोई आ रहा है मीटिंग में तो मुझे वो विंडो गायब हो जाती नजर हो रही है बार बार. एनीवेज कोई आए तो बता देना. So it's a field, it's a structured field, it is complete, and it is Archimedean. That you can always find a multiple of a real number that exceeds another given real number. Uh, Now, let us see what this theorem says. If I have an open interval AB, uh, that is subset of R, it always contain a rational number. Now, what we mean is that कि मुझे कोई भी interval दिया जाए, open interval, it will definitely contain a rational number. There is another such theorem which says that given any open interval, it will contain an irrational number. So the proof of existence of a rational number in any open interval I'm sharing here, and the proof for irrational numbers is given in that other book that I have shared with you on Facebook, Real Analysis by Trench. But if you understand one proof, that is sufficient for the development of our concepts in this subject. अच्छा था, केस वन, ये ओपन इंटरवल ऐसा है कि जो कि राइट साइड ऑफ जीरो है. A is a positive number, B is a positive number, A is smaller, B is greater than. Now, we see that this corollary implies that there exists a natural number m such that I can write down 1 upon m less than b minus a. Now, whether b minus a is a small number or not, it doesn't matter. अगर एप्सिलॉन उस तरह से नहीं स्मॉल जिस तरह से हम समझते हैं, if it is large, even then I can find an integer whose reciprocal will be less than this. So this property is useful here. B minus a can be a small number or large number. जो भी number है, that will exceed a reciprocal of some integer. Think about any example. चलो B is say 10 and A is say 5. So B minus A is 5. The 5 will be greater than what reciprocal of what number? Will it be greater than 1 by 10? Is 5 greater than 1 by 10? Yes. Yes. 1 by 2? Yes. 1? Yes. So manage to choose key number 5 or 10. They are very far apart. So you take some number A and B that are very close, 1.1 and 1. Then the difference is what? 0.1. Now 0.1 is 1 upon 10. And you can always find an integer such that 1 upon 10 is greater than 1 upon that integer. 1 upon 10 is greater than 1 upon 9. 1 upon 10 is greater than 1 upon 8. So this is a consequence of corollary 3, that for every interval that is on the right of 0, we have this result. Now let us make a set A which contains natural numbers with the property that n upon m is greater than a, or n is greater than am. Now, by Archimedean property, A is not empty.
सेट ए। हमने ये सेट ए किस बुनियाद पर बनाया है? इस बुनियाद पर बनाया है कि ये जो नंबर इंटरवल का स्टार्टिंग नंबर है, दिस नंबर हैज टू बी स्मॉलर देन सम इंटीजर डिवाइडेड बाय m, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और n is greater than am. So by Archimedean property, a is not empty. There must be one integer which satisfies this property. a को जब तुम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा हो या बड़ा हो इसमें कुछ तब्दीली वाकई होगी, and you can always find an integer which is greater than this. So that is Archimedean property, and due to that, a will not be empty. There will be some integers that belong to this set. Then by well ordering property, or principle of the set of natural numbers, the set A has a first element. चूंकि ये इंटीजर्स का सेट है, इसमें कोई एक पहला एलिमेंट होगा. रिमेंबर पियानोस पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हुए हमने कहा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एक पहला नंबर होगा, और सेट ऑफ इंटीजर्स मैं जब भी बनाऊं तो मेरे पास एक फर्स्ट एलिमेंट होगा ऐसा जिससे, सो दैट वो किसी का सक्सेसर नहीं होगा. इसका मतलब एन नॉट माइनस वन विल नॉट बी सर एक बच्चा वेट कर रहा है क्लास में इंटरवल. ये क्यों नहीं आ रहा मेरे पास यार? कुछ गड़बड़ है आज. आ गया आ गया आ गया. हाँ भाई, कौन इंतजार कर रहा है? आई डोंट सी एनीवन वेटिंग. यस, हनीफा इज वेटिंग. ओके. आई होप दिस विंडो रिमेन्स देयर. हाँ भाई, ये प्रूफ समझने में बीच में डिस्टर्बेंस हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है. हमने ये बात की थी कि ये सेट ए जो है वो आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी की वजह से एम्प्टी नहीं होगा, और उसके बाद हमने ये बात की थी कि इसमें एक पहला एलिमेंट होगा जो किसी का सक्सेसर नहीं होगा. इसका मतलब एन नॉट माइनस वन जो है वो एक में नहीं होगा. जब एन नॉट माइनस वन विल नॉट बिलोंग टू ए, so n naught minus 1 upon m will not be greater than a but less than or equal to a. Now let us look at a, which implies that n naught upon m here is equal to a plus 1 upon m, and 1 upon m is less than b minus a. So n naught upon m is less than actually b. So there is a rational number n naught upon m which is less than b. Whether it is greater than a or not, let us see. But n naught is an element of a set A. This means n naught upon m is greater than a. So B says that a rational number n naught upon m is less than b, and C says that n naught upon m is greater than b, greater than a. That means this n naught upon m lies between a and b, and it is proven that every interval, open interval, contains a rational number. In fact, not one, but infinitely many rational numbers. Case 2, and I will अच्छा, जैसे ही मैं इस पे आता हूँ तो वो गायब हो जाते हैं वो विंडोज. केस 2 इज वेल ऑर्डरिंग, हाँ जी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का आपने लिखा हुआ है यहाँ पे जी. वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ऑफ एन, that is in fact reference to Peano's postulate, जिसमें हमने कहा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो उसमें एक पहला एलिमेंट होता है जो किसी का सक्सेसर नहीं होता. बाकी हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है. 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, लेकिन 1 किसी का सक्सेसर नहीं है. 1 succeeds no number. So that is the reference used. So अगर n नॉट पहला एलिमेंट है इस सेट का तो n नॉट माइनस वन इस सेट में नहीं होगा.
Case 2 is that we don't have uh, A positive, but A is negative. And I leave this case for you to think about yourself. अगर दोनों नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव्स को बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह ट्रीट कर सकते हैं बाय टेकिंग नेगेटिव ए एंड नेगेटिव बी, जो कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और जब वो पॉजिटिव नंबर होंगे तो पहले ही हम प्रूव कर चुके। My connection was dropped. It's connected again. Can you listen me? Can you listen to me? Yes, Yes, sir. Okay, okay. मुझे लग रहा है कई सारे फीचर्स पता नहीं क्या हुए हैं। So at this point, the last corollary, every open interval in fact has infinitely many rational number. I mentioned before introducing this theorem 3 कि हमने यहाँ claim किया है कि हर interval में, हर open interval में जो subset है R का, and that, by that we mean all real numbers between A and B, not including A and B. तो इसमें एक रैशनल नंबर जरूर होगा जिसको हमने यहाँ प्रूव किया, और ये corollary कह रही है कि सिर्फ एक ही नहीं होगा, infinitely many होंगे. With that, I terminate discussion on chapter 1, and I will switch my screen to chapter 2, which is about open sets, closed sets, and countable sets. ये मैंने पूरे चैप्टर के जो है ना पिक्स लेके एक पीडीएफ फाइल बना दी है जो आपसे शेयर कर दी है। मेरे ख्याल है व्हाट्सएप पे भी की है और फेसबुक ग्रुप पे भी की है और रिसोर्सेज ऑन एलएमएस में भी मेरे ख्याल है ये डाल दी है। some days ago somebody said कि ये किताब की पीडीएफ, तो मैंने बताया था कि किताब की पीडीएफ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इंडियन एडिशन है किताब का, उस एडिशन से मैं आपको पिक्स लेके पीडीएफ बना के तो आपसे शेयर करूँगा। So in chapter 1 our focus was the set of real numbers. सबसे पहले तो ये कि field. Then we showed that it has well ordering, ordered है any two real numbers, law of trichotomy और उस तरह की जो कुछ की बातें हमने की ऑर्डर से मुताल्लिक 4 प्रॉपर्टीज की ऑर्डर की, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स भी सेटिस्फाई करता है, तो फील्ड भी है, ऑर्डर भी है, और कंप्लीटनेस, any subset of set of real numbers which is bounded, its supremum and infimum are both elements of the set of real numbers. If a set is only bounded above, then its supremum is an element of set of real numbers. If it is only bounded below, then its infimum is set of real numbers. मगर ये प्रॉपर्टी जो है फिर रैशनल्स में नहीं है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का तुम कोई सबसेट ले लो जो कि बाउंडेड अबव हो, लाइक आई कंसीडर वन सेट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, जो कि बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगर एक्स रैशनल नंबर्स का सेट है एक्स स्क्वायर लेस देन 2, तो इसके जो सुप्रीमम और इंफीमम है वो माइनस रूट प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 है। ये दोनों रैशनल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब है रैशनल नंबर्स का सेट कंप्लीट है। तो कंप्लीटनेस वाज वन थिंग, एंड द लास्ट थिंग अबाउट रियल नंबर्स दैट वी explored or discussed today is that set of real numbers is Archimedean, in the sense that you have any two real numbers a and b, a less than b, you can always find an integer which when multiplied to a will exceed b. Sometimes people think about कि यार इस तरह की properties जो हैं उन सबका क्या फायदा है? When we advanced into concepts in pure mathematics, more and more pure, we require
terminologies, we require concepts, we build up in order that we can describe more advanced concepts. For example, uh, we have used the word neighborhood, uh, and I use this word neighborhood in the sense that there is some real number a, and I consider some positive real number, say h. तो a minus h से लेके a plus h तक एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, जिसको मैंने नेबरहुड ऑफ ए कहा था, और शायद मैंने टर्म वो भी इस्तेमाल की थी, रेडियस. What I'm talking about is you have a line, you have some point A, and you talk about A plus H, A minus H, both not included, so that you have open interval A minus H to E plus H. इसको हमने पहले नेबरहुड कहा था, मैंने ये नोटेशन भी शायद इस्तेमाल की थी. Neighborhood of A with radius h. Can you see the whiteboard? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो मैंने इससे पहले नेबरहुड का लफ्ज जो था वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया था. मगर हम नेबरहुड के उसको कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर रहे हैं इस वक्त. In the second chapter, we begin with the generalization of this concept of neighborhood, and we will go up to a very important theorem in analysis known as Bolzano-Weierstrass theorem, which is a fundamental theorem of real analysis, जिस जो कि एक sufficient condition describe करती है कि किसी set का limit point होगा. A sufficient condition under which every set will have a limit point. Now, what is limit point? ये भी हमने इस चैप्टर में एक्सप्लोर करना है. लफ्ज लिमिट आपने कई जगह सुना है. लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ फंक्शन. Have you heard the word point of accumulation? No, sir. Oh, so let me show you first point of accumulation, and then I will switch to. Can you see this? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yes, sir. Okay, मैं क्या कह रहा था? लिमिट पॉइंट. मैंने एक सेट डिस्कस किया था 1/n, where n is a natural number. So the elements of this set are 1, 1/2, 1/3, etc. Okay. Now, if I extend this set and draw the points of this set on the line, here is 0. The first, sorry, this is not correct. I should have put. So let me complete the line again. 0 is somewhere here. This is 1. So इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, हम बात कर रहे थे कि लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा या लीस्ट नंबर बाउंड क्या होगा, तो आप लोगों ने सही इंडिकेट किया था कि 1 is towards right most. So 1 के बाद what element is there? There is 1/2. Then 1/3 is placed somewhere here. Then 1/4 is placed somewhere here. Then 1/5 is placed somewhere here. And then you will see that as n becomes larger and larger, the point will come closer and closer to 0. When n is 1000, it is 1/1000 element of this set and very, very close to 0. Now, this is the region or an interval of around 0. आप इसको कितना ही छोटा कर लें, राइट साइड पे इस सेट के एलिमेंट्स होंगे यकीनन कोई ना कोई.
Can you feel that? Yes. You think about a large number, n, 1,000, 1,000,000. Elements of the set are of what form? 1 upon, reciprocal of that. So 1 upon 1,000,000 will be very close to 0. In fact, ये जो मैंने इंटरवल बना दिया इस तरह से, इस रीजन में सेट के इस सेट के infinitely many members होंगे. Only finite number of elements are outside. So ये रीजन जो है, it is the region where huge number of elements of this set are accumulated. Accumulation, point of accumulation, region of accumulation, पॉपुलेशन के भी होते हैं. अगर पाकिस्तान का पॉपुलेशन मैप देखो तो तुम्हें अगर फर्ज कीजिए 100,000 people is represented by one dot, then around Karachi there will be many dots, whereas around Quetta there will not be many dots. So Quetta is also a point of accumulation. Karachi is also a point of accumulation. Lahore is also a point of accumulation for population, but these are all finite accumulations. But when we are talking about this set, in fact, this set has infinite accumulation. And this is the concept behind limit point that we'll explore in this chapter. So let me go back to this and start considering uh, what is described in this chapter. Neighborhood is defined in a slightly different manner. I said we are generalizing the concept of neighborhood. Set of real numbers का कोई भी subset will be called a neighborhood of a point A. Any subset of R will be called a neighborhood of point A if there exists an open interval I that contains the point A, and that interval I is also contained in this set N. So open interval तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, A minus H और A plus H किस्म का. तो वो ओपन इंटरवल जो था वो सिमेट्रिक था अबाउट A. यहाँ जब हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इट मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक अबाउट A. And what is meant by that? So I'm not talking about, initially I talked about A, say A plus H or A minus H. ये भी इंक्लूडेड नहीं, ये भी इंक्लूडेड नहीं. मगर ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल भी आई है हमारी इस डेफिनेशन का. और इफ आई हैव open interval of this type and A is somewhere here, so ये भी I है. That means अब जो हम ओपन इंटरवल का जिक्र कर रहे हैं उसमें A के ओपन इंटरवल का, तो इस वाले ओपन इंटरवल में तो A is the center of the interval, but इस वाले इंटरवल में A is not the center of the interval, but still it is an open interval. So N is a neighborhood, and a subset of set of real numbers is a neighborhood of a point A if A is contained in an open interval which is subset of N. So this is generalization of the idea of neighborhood. So it follows from the definition that an open interval is a neighborhood of each of its points. The way we have generalized the idea, ये असल में इंटरवल I में A कहीं भी हो सकता है. इसका मतलब है इंटरवल I का हर एलिमेंट जो है उसके लिए I open interval is a neighborhood itself. Or this, if I is contained in some larger set, then that larger set N is the neighborhood of every point in this open interval. The open intervals containing the point are not the only neighborhoods of the point, but they prove quite adequate
for a discussion like ours and are more expressive of the idea of neighborhoods as understood in ordinary language. We shall therefore, whenever convenient, we take the same a minus h, a plus h type of interval as an open interval where h कहें या delta कहें, it's a positive real number. तो जो कोर आइडिया नेबरहुड का है, जब भी हमारे लिए कन्वीनियंट होगा तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे. अच्छा भाई, have you heard this term deleted neighborhood before? No, sir. अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात बताओ. Any Mr. XY or Miss XY present in the class, ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? घर में. घर में. अच्छा, आप अपने पड़ोस में तो नहीं रहते ना? वहाँ भी चले जाते हैं कभी कभी. रहते नहीं है वहां पे. कभी कभी चले जाना और बात है, रहते नहीं है वहां पे. Now when I say that A का नेबरहुड A माइनस डेल्टा से A प्लस डेल्टा तक है, तो बताओ A इस नेबरहुड में है कि नहीं? अरे भाई, कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने. है ना? सेंटर ऑफ द इंटरवल है और उसके अंदर मौजूद है. तो ये तो कुछ नेबरहुड के लफ्ज के साथ जाती है कि जिसके नेबरहुड की बात कर रहा हूँ वो खुद भी उसी नेबरहुड में है. Practically, this is not a good idea. So we have an idea deleted neighborhood. That means we consider the interval a minus delta to a plus delta, but हम कहते हैं भाई x कोई भी नंबर हो सकता है between a minus delta and plus delta, लेकिन x जो है वो a नहीं हो सकता. That means x minus a distance is positive. अगर x is equal to a हो तो फिर ये 0 हो जाएगा, which is possible here in the neighborhood but not here. So an open interval a minus delta to a plus delta, जिसमें से कि मैंने a को बीच से निकाल दिया, तो ऐसे नेबरहुड को हम डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे. और इस डिलीटेड नेबरहुड की अगर मैं पिक्चर बनाना चाहूं तो वो पिक्चर कैसी होगी जनाब? लेट अस सी. I want some space to write. Okay, so a minus delta comma a plus delta. जब मैं नेबरहुड ऐसे लिखता हूं तो this contains a. लेकिन अब हमारे पास जो डिलीटेड नेबरहुड है वो बहुत दरअकीकत होगा a माइनस डेल्टा से लेके a तक यूनियन a टू a प्लस डेल्टा. दैट मीन्स हमने a को छोड़ दिया बीच में से, तो इस इंटरवल के दो हिस्से कर दिए, a को निकाल दिया. नाउ दिस इज डिलीटेड नेबरहुड, दिस इज सिंपली नेबरहुड ऑफ a, दिस इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. I hope that gives you a clear idea of what we mean by deleted neighborhood. Yes, sir. All these things will be very useful in our discussion to follow. सर लेकिन हम ए को निकालना क्यों चाह रहे हैं? हाँ, यही तो मैं बात करने लगा था. हम वो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं जिनसे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करना आसान हो जाए. ये आवाज कम आ रही है. मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सॉरी यार, मैं तो अपना सेल फोन बंद कर रहा हूँ. बार बार बज रहा है. ओके, सवाल ये पूछा गया था कि हम क्यों निकाल रहे हैं एक को नेबरहुड से और एक नया कॉन्सेप्ट या नया टर्म इंट्रोड्यूस करें डिलीटेड नेबरहुड की. तो बात ये है कि जो कुछ भी हमने आगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं उनके लिए मैं टर्मिनोलॉजीज और एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ. और जरा इन एग्जाम्पल्स पे गौर कर लीजिए. अच्छा, ये नेबरहुड को ब्रीफली कुछ लोग NBD लिखते हैं, मैं अक्सर बेशतर फ्री राइटिंग में NGHD लिख देता हूँ या NGBD. तो जाहिर है कि लफ्ज इतना लंबा लफ्ज है
और हम लोग वैसे ही सुस्त लोग होते हैं, तो वी यूज एन एब्रिविएशन ऑफ अ नेबरहुड. ओके, लेट अस थिंक अबाउट सेट ऑफ रियल नंबर्स. कहा जा रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. कैन यू फील इट? पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड है, क्योंकि हर एलिमेंट के गिर्द आप एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं और वो ओपन इंटरवल जो है वो आर का सबसेट होगा. तो एन की जगह ऊपर जो कुछ हमने लिखा था एन के लिए, एन की जगह आर रख दीजिए. तो एवरी पॉइंट आर इज द नेबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट, एवरी एलिमेंट ऑफ. whereas सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के में ये प्रॉपर्टी नहीं है. फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? इट्स नॉट a neighborhood of any of its point. द रीजन इज दैट कि जब हम नेबरहुड ले रहे होते हैं तो पहले एक पॉइंट कंसीडर करते हैं. तो एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लीजिए, फिर उसका एक ओपन इंटरवल कंसीडर करते हैं और फिर कहते हैं कि उस ओपन इंटरवल जो है every element between the ends of the open interval have to be included in a larger set which is a subset of पहले R था, अब Q है, हमारी यूनिवर्स Q है तो अब Q होगा. लेकिन as soon as I make A minus delta to A plus delta an interval about A is a rational number, तो A minus delta से A plus delta तक जितने पॉइंट्स हैं उसमें रैशनल्स भी होंगे और इरेशनल्स भी होंगे. इसका मतलब ये इंटरवल जो है वो रैशनल नंबर्स का सबसेट नहीं होगा. इस वजह से रैशनल नंबर्स का सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता. समझ में आई ये बात? सर ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ए के नेबरहुड में इरेशनल नंबर्स भी होंगे. जी हाँ, लिहाजा ओके. जो जो इंटरवल आई बनेगा, interval I will not be truly a subset of the set of rational numbers, इसलिए कि उसमें irrational भी हैं. लिहाजा सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो तो अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड है, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है. इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है. Whereas any open interval that you consider from A to B of real numbers is a neighborhood of every point of this interval itself. अब open interval A से B तक क्या है? All real numbers between the number A and B, not included A and B. तो ना ये ओपन इंटरवल की खुसूसियत ये होती है कि ना तो मैं इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट बता सकता हूँ, ना मैं इसका लार्जेस्ट एलिमेंट बता सकता हूँ. तो A से बड़ा, फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरवल 1 से 2 तक हो, तो 1 से बड़ा सबसे छोटा नंबर क्या होगा मैं नहीं बता सकता. जो कुछ भी बताने की कोशिश करूं 1.0001 और 1 और 1.0001 के दरमियान जितना डिफरेंस है उससे छोटा डेल्टा लेके एक इंटरवल बना लो और वो इंटरवल ओपन इंटरवल का सबसेट होगा. लिहाजा ये ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा. इसी तरह अगर 2 इसका बी वैल्यू 2 है तो लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे नहीं पता क्या होगा. 1.9999 1.9999 और 2 के दरमियान जितना डिफरेंस है उससे छोटा डेल्टा कंसीडर करो जिससे 1.99999 के गिर्द एक ओपन इंटरवल बन जाएगा एंड दैट ओपन इंटरवल बी completely contained in the interval 1 to 2. So AB is a neighborhood of each of its point. What about A and B? A and B is set open interval के points ही नहीं है, इसमें included ही नहीं है. तो हम तो बात कर रहे हैं कि ये इंटरवल नेबरहुड है इसके हर पॉइंट का. I hope you get this point. Closed interval. Closed interval is the neighborhood of each of the point in the open interval, corresponding open interval. But this interval, closed interval, is not
नेबरहुड ऑफ एंड पॉइंट्स ए एंड बी। भाई क्लोज इंटरवल ले लिया जिसमें ए भी शामिल है बी भी शामिल है, क्लोज इंटरवल 1 से 2, 1 भी शामिल है 2 भी शामिल है। अब ये इंटरवल 1 का नेबरहुड नहीं है, क्यों नहीं है? Should I go to picture? That was open interval. Every point between 1 and 2, and you can make an open interval which is contained in this open interval. So this open interval is a neighborhood of each of its point. Whereas if I consider close interval, अब 1 और 2 की बात हो रही है, why 1 is not this interval is not a neighborhood of 1? क्या ये कंसीडर कर दो, ये तो पॉइंट ही नहीं है सेट का, ये पॉइंट है सेट का, मगर अब क्लोज इंटरवल 1 2 इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 1, इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 2। क्यों? जिस पॉइंट की नेबरहुड की बात हो रही है उसके गिर्द पहले एक ओपन इंटरवल कंसीडर करना है आपने। अब 1 के गिर्द आपने एक ओपन इंटरवल कंसीडर किया, कितना छोटा हो, दैट विल नॉट बी द सबसेट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसका ये लेफ्ट पार्ट हमेशा बाहर होगा इस सेट के। लिहाजा क्लोज इंटरवल जो है दैट इज अ नेबरहुड of every point of the corresponding open interval, but this closed interval 1 and 2 is not a neighborhood of endpoints, because endpoints के गिर्द जब भी तुम इंटरवल कंसीडर करोगे उस इंटरवल का कुछ हिस्सा सेट के बाहर होगा। दैट मीन्स an open interval around 1 is not contained entirely in this set, so this set is not a neighborhood of 1. Whenever you consider small neighborhood around small interval about open interval about 2, इसका कुछ हिस्सा जो है वो इस close interval से बाहर होगा। So that open interval around 2 will always have some part outside this. So this close interval cannot be a neighborhood of 1 as well as 2. Null set is the neighborhood of each of its point. क्या कहते हैं आप इसके बारे में? It says that in the sense that there is no point in phi, the null set, उसमें जब पॉइंट ही नहीं है तो हम लॉजिकली कह सकते हैं कि नल सेट अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड है, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका कोई नेबरहुड नहीं है। इसलिए लॉजिकली हम कहते हैं कि नल सेट का नल सेट अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड है। ओके, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट is not a neighborhood of any point. Non-empty finite set. By definition, neighborhood n is a neighborhood of a point A. तो पॉइंट ए का पहले एक ओपन इंटरवल होना चाहिए। ओपन इंटरवल का मतलब है a माइनस एच ए प्लस एच, जिसमें हर रियल नंबर शामिल है। इसका मतलब है वो इंटरवल ही जो आप लेंगे ओपन इंटरवल वो इन्फिनिट सेट है। तो फिर कोई फाइनाइट सेट अगर आ जाए तो उसका फिर नेबरहुड नहीं हो सकता, उसके किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। मैंने एक सेट बताया था अभी 1/n, और मैंने आपको ये बताया था कि 0 से
1 तक इसके एलिमेंट्स हैं। गो कि ये फाइनाइट सेट नहीं है, मगर ये सेट जो है अपने किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं है। अभी हम क्या चीज छोड़ के आए हैं कि कोई फाइनाइट सेट जो है उसका कोई एलिमेंट जो है कोई फाइनाइट सेट जो है अपने किसी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होगा। इमीडिएटली मैं आपके सामने उसको समझाने से पहले ये सेट फिर लेकर आ गया। ये सेट बड़ा यूजफुल है, बहुत से कॉन्सेप्ट समझाता है। हाँ भाई, क्या 1/2 इस 1/2 का ये सेट नेबरहुड है? तो भाई ये सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले मुझे ये सोचना होगा कि 1/2 के गिर्द मैं एक ओपन इंटरवल बनाऊं। ठीक है, 1/2 के गिर्द मैंने एक ओपन इंटरवल बना लिया। इस ओपन इंटरवल में इस सेट का कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ 1/2। इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं इस ओपन इंटरवल में वो इस सेट के एलिमेंट्स ही नहीं है। इसका मतलब है ये जो ओपन इंटरवल आई मैंने बना दिया वो इस सेट का सबसेट नहीं है। जब इस सेट का सबसेट नहीं है तो ये सेट जो है 1/2 का नेबरहुड नहीं हो सकता। जिस पॉइंट का नेबरहुड देखना है पहले उसके गिर्द ओपन इंटरवल बनाओ। उस ओपन इंटरवल में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो लार्जर सेट में है कि नहीं है, देन वी डिसाइड कि ये लार्जर सेट जो है वो इस पॉइंट का नेबरहुड है कि नहीं है। आप कहें यार आप 1/1000 जीरोस लगा दो, मगर ये नंबर जो है बहुत छोटा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। इसका ओपन इंटरवल बनाए, अब वो ओपन इंटरवल जो है is that will whenever you make an open interval around any point it contains all real numbers between the ends of the open interval। मगर इस सेट में सारे रियल नंबर थोड़ी हैं, लिहाजा सिर्फ फाइनाइट सेट ही की बात नहीं है जो कि हमें अभी किताब में जो एग्जाम्पल देख रहे थे। इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइनाइट सेट्स। we have just seen an example where set was infinite मगर डिस्क्रीट सेट था वो, यानी हर दो एलिमेंट्स के दरमियान गैप था। जहां हर दो एलिमेंट्स के दरमियान गैप आएगा वहां पे जैसे ही आप ओपन इंटरवल बनाएंगे अबाउट अ पॉइंट that will contain all real numbers between its end and the larger set जो हम देख रहे हैं कि वो नेबरहुड है कि नहीं है, ओपन इंटरवल उसका सबसेट ही नहीं है। सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड, अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड n है और n itself is a subset of m तो m भी नेबरहुड होगा। क्यों? n अगर नेबरहुड है तो n will contain that open interval about the point x। जब ओपन इंटरवल अबाउट पॉइंट x n में है तो जो n जिसका सबसेट है उसमें भी होगा, लिहाजा वो भी उसका सुपर सेट जो है दैट इज आल्सो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट। किसी पॉइंट का नेबरहुड देखना है पहले उसके गिर्द एक ओपन इंटरवल देखें। अब वो इंटरवल सेट n में का सबसेट है कि नहीं, अगर सेट n का सबसेट है तो सेट n उस पॉइंट का नेबरहुड है, और n किसी और सेट का सबसेट है तो वो भी इसका नेबरहुड है। लार्जर से लार्जर सेट m किसी और सेट का सबसेट है तो वो भी इसका नेबरहुड है। सो a point can have multiple neighborhoods। Then there are typical properties like neighborhoods का जो यूनियन होगा किसी भी पॉइंट का वो भी नेबरहुड होगा। अगर m और n नेबरहुड्स हैं किसी पॉइंट x के तो m और n का इंटरसेक्शन जो है वो भी नेबरहुड होगा। एग्जाम्पल 3 में तो हम प्रूफ डिस्कस कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि ये वाला प्रूफ देख के आप ये वाला प्रूफ सोचिए कि कैसे होगा। हाँ भाई, यहाँ पे कहा जा रहा है m और n जो है वो एक पॉइंट x के नेबरहुड्स है।
और हमने ये शो करना है कि m इंटरसेक्शन n जो है वो भी x का नेबरहुड होगा। अगर m x का नेबरहुड है तो पहले तो आप x का एक टिकट एक ओपन इंटरवल बनाएंगे जो कि m का सबसेट होगा। फिर आप x के गिर्द एक और ओपन इंटरवल बनाएंगे जो कि n का सबसेट हो। नाउ यहाँ पे रेडियस ओपन इंटरवल का डेल्टा 1 लिया गया, यहाँ डेल्टा 2 लिया गया। अब मुझे पिक्चर पे जाना पड़ेगा फिर। So I consider a line, एक ओपन इंटरवल किसी पॉइंट x का ओपन इंटरवल ये है और एक और ओपन इंटरवल ये है। This I belongs to say a subset of M, and this interval open interval around x is a subset of n. एक रेडियस डेल्टा था और डेल्टा 1 था और एक का डेल्टा 2 था। नाउ x is contained in m as well as n। तो x का जो इंटरवल इर्द गिर्द जो हमने ओपन इंटरवल्स बनाए हैं उन ओपन इंटरवल्स का कोई ना कोई इंटरसेक्शन होगा, यानी some points that belongs to x minus delta 1 to x plus delta 1, कुछ पॉइंट इसके जो है वो इसमें भी आएंगे। फर्ज कीजिए वो जो कॉमन रीजन आएगा वो कॉमन रीजन फर्ज करें ये यहां से लेके एक ये था एक ये था, तो कॉमन रीजन ये है। इस रीजन को डिफाइन करने के लिए आई कैन यूज अनदर डेल्टा। Since this interval contains all points between x minus delta 1 x plus delta 1, this interval contains all points x minus delta 2 x minus delta x plus delta 2, तो इनका जो कॉमन आएगा that will also contain all elements between these two numbers, and this will be a subset of the intersection. So this interval, this is a subset of m intersection n. That is what had to be proved. मैंने डिस्क्राइब कर दिया, यू गो थ्रू रीडिंग इट। उसने कहा कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से जो छोटा है उसको डेल्टा कह दो। इसके बारे में जहन में आप सोचिए, और सोचने का क्या तरीका होता है, आप एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं होते, लेकिन एग्जाम्पल से प्रूफ समझ में आते हैं। कोई एक्स ले लीजिए 2.5, 2.5 के गिर्द एक इंटरवल बनाइए, 2.5 के गिर्द एक और इंटरवल बनाइए, दोनों इंटरवल्स का साइज डिफरेंस रखिए और अब देखिए कि उनके उसका कॉमन क्या है। और फिर देखिए कि यहाँ पे जो रेडियस इस्तेमाल किया गया और यहाँ जो रेडियस इस्तेमाल किया गया उनमें जो छोटा रेडियस है उसको डेल्टा ले लें, तो ये सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। आई लीव दिस फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इंटीरियर पॉइंट, this is one of the most fundamental idea, one of the most important ideas in this course and the courses that are more advanced to this. Somebody saying something? सर आवाज कम आ रही थी आप? अब सही है? जी सर। मैं कह रहा था कि इंटीरियर पॉइंट जो है किसी भी सेट का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आइडिया है। तो हम किस को कहते हैं कि किसी सेट एस का
इंटीरियर पॉइंट है. X is said to be an interior point of a set S if S is a neighborhood of X. अब इस सिंपल से कॉम्पैक्ट जुमले के अंदर हमने क्या क्या कहा? X के गिर्द एक ओपन इंटरवल होगा, वो ओपन इंटरवल जो है सेट S का सबसेट होगा. तो S इस पॉइंट X का नेबरहुड कहलाएगा. अगर S X का नेबरहुड है तो X जो है वो S का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा. In other words, X is an interior point of set S if there exists an open interval AB containing X and that this open interval is entirely contained in S. I'll take you back to some examples. Now I consider X to be lying between 3 and 3.5. So my set, this makes my set S. And then I consider a point, say 3.18. 3.18 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं? तो 3.18 के गिर्द मैं एक इंटरवल कंसीडर करूंगा, नेबरहुड कंसीडर करूंगा. Now this is entirely contained in S or not? ये उसी वक्त मुमकिन है जब 3 से लेके 3.5 तक के सारे रियल नंबर्स हमारे इस सेट में हों. लिहाजा इस सेट के किसी पॉइंट का नेबरहुड कंसीडर करूंगा तो दैट विल बी कंप्लीटली इन द सेट S. So 3.18 is an interior point. 3.9 is of course 3.4 is of course an interior point of this. 3.499 is an interior point of this. What about 3.000001? Is 3.00001 an interior point of S? Yes. Yes, sir. What about 3? No, sir. Yes, sir. No, sir. 3 is not an interior point of Yes, set sir. S. इसलिए कि 3 का गेट तुम इंटरवल बनाओगे उसका पार्ट कुछ ऐसा होगा जो सेट S में नहीं होगा, और रह जाएगा. बाहर चला जाएगा. Right? So that is the basic idea of interior point. The set of all interior points is called the interior of the set. हम S super I ये नोटेशन इस्तेमाल करते हैं इंटीरियर ऑफ सेट. अब अगर मेरे पास क्लोज इंटरवल 5 से 7 तक है, make the figure in your brain. क्लोज इंटरवल 5 to 7. 5 भी शामिल है, 7 भी शामिल है. Every point between 5 and 7 is an interior point of the interval, close interval 5 to 7. But 5 and 7 are not interior points of the set. Close interval 5 to 7. तो S को जहन में थोड़ा समझिए, क्लोज इंटरवल 5 to 7. तो S का इंटीरियर क्या होगा? अगर मेरे पास क्लोज इंटरवल 5 to 7 है तो उसका इंटीरियर क्या होगा? Set of all interior points of the set. पूरी 5 to 7. क्लोज इंटरवल में every point greater than 5 and every point less than 7 is an interior point. 5 and 7 चाहे क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है. लिहाजा अगर S क्लोज इंटरवल 5 7 है तो S का इंटीरियर जो है वो ओपन इंटरवल 5 7 है. गेट माय पॉइंट? Yes, sir.
अगर ओपन इंटरवल 5-7 है तो ओपन इंटरवल 5-7 का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो लिहाजा उस केस में सेट और इस सेट का इंटीरियर सेम है। इसने यहाँ पे पूछा है आपसे कि शो दैट द इंटीरियर्स ऑफ द सेट natural numbers, integer, rational numbers is a null set, but the interior of R is R. Natural numbers का इंटीरियर null set क्यों है? Natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 लें या 1000 लें, 1000 के गिर्द इंटरवल बनाओगे, उसके अंदर रियल नंबर्स आ जाएंगे और ये n का सबसेट नहीं होगा। लिहाजा 1000 जो है वो n का गैप्स है। जैसे अभी एग्जांपल बना पॉन n वाली दी थी, सेट ऑफ इंटीरियर्स में भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही किसी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का कोई पॉइंट तुमने कंसीडर किया और उसके गिर्द तुमने एक ओपन इंटरवल कंसीडर किया, तो उस ओपन इंटरवल में रैशनल्स भी और इरेशनल भी हैं। लिहाजा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसके गिर्द आपको ऐसा ओपन इंटरवल मिले जो सिर्फ और सिर्फ सेट क्यू का सबसेट हो। नहीं, इसमें और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, लिहाजा वो क्यू का सबसेट नहीं है, लिहाजा क्यू का कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सो इन तीनों सेट्स के इंटीरियर्स नल सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ set of real numbers. So in R, I and R are same. Interior of R and R is same. सर जी, सर अभी आपने बोला कि 5 और 7 क्लोज चाहे वो इंटरवल। क्लोज इंटरवल हो या ओपन हो, दोनों 5 और 7 इंक्लूडेड नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि 5 और 7 चाहे क्लोज कंसीडर करो चाहे ओपन कंसीडर करो, इंटीरियर सेम है। सही है, ठीक है। ठीक है, 5 और 7 क्लोज के अंदर तो 5 और 7 सेट के एलिमेंट्स हैं, ओपन में 5 और 7 सेट के एलिमेंट्स नहीं है। क्लोज 5 और 7 का इंटीरियर ओपन 5 और 7 है। ओपन 5 और 7 इंटरवल जो है वो खुद अपना इंटीरियर है। Show that the interior of a set is a subset of set. मैं नहीं कर रहा इस पे बात, आप खुद ही सोचिएगा। अभी जो बातें की है सारी उसमें ये शामिल है। So we come to the next important and fundamental idea, open set. अभी तक हम लफ्ज ओपन और क्लोज्ड को बड़े महदूद मानों में इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो ये था कि हम इंटरवल लेते थे, इंटरवल के एंड पॉइंट्स जो अगर शामिल नहीं है तो उसको ओपन इंटरवल कहते थे, और अगर एंड पॉइंट शामिल हैं तो उसको क्लोज इंटरवल कहते थे। अब हम ओपन इंटरवल की बात नहीं कर रहे, हम ओपन सेट की बात कर रहे हैं। सेट, हाँ ब्रेक लेने जी, ब्रेक लेने अभी। नहीं मैं 5 मिनट बाद क्लास खत्म करने वाला हूँ। मेरे असल में थोड़ा सा बैक में पेन है थोड़ा सा, तो मेरा आज एक्सटेंडेड क्लास लेने का प्रोग्राम ही नहीं था। वो ठीक है शुरू में ठीक है मुझे किसी ने एक फेसबुक पोस्ट की तरफ लगा दिया था, तो मैं कई बातें शुरू करना भूल गया। तो बल्कि ऐसा करते ना, आई स्टॉप एट दिस पॉइंट। मैंने इस चैप्टर के 2 आर्टिकल डिस्कस कर लिए। ये पूरा चैप्टर जो है मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, आप इसको पढ़िए पहले से तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो टाइम आज लूज कर रहा हूँ, अगर आप लोग बुरा ना माने तो इतवार के दिन किसी वक्त 4 बजे के बाद आप लोगों से मुलाकात कर लूँ। मानेंगे बुरा है। बुरा मानोगे? नहीं कर रहा नहीं सर, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। भाई, जो बुरा मानेगा वो क्लास में ना आए, रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी तक हमारी जो क्लास है वो तकरीबन 70-75 मिनट की हो गई है, और हमें 15 मिनट और डिस्कशन करना था, 20 मिनट और करना था, लेकिन आई एम स्टॉपिंग इट हियर। तो 20 मिनट, 20-25 मिनट या आधा घंटा की मैं डिस्कशन रखना चाह रहा था। ओके, आई स्टॉप एट दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन सेट we'll start our discussion next time. So thank you very much for being with me. Only 12 of you. That is sufficient.
First, I stop the recording.